Welcome back, class. We'll be discussing whether the problem driven should be used by the organization or the data driven should be used, or the combination of two should be used. So, if we talk in the real world, in practice, the most effective strategy is often integrating the both approaches. Means the organization should use the problem driven as well as the data driven in its decision making, because the organization should start with the data driven approach, as it can help to identify the underlying issues and opportunities. अगर डेटा ड्रिवन यूज हो रहा है तो आपके जो डेटाज है वो कंटिन्यूसली कलेक्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली एनालाइज हो रहे हैं. इसकी वजह से क्या होगा, कोई अपकमिंग चैलेंज होगा तो आप उसको बेहतर आइडेंटिफाई कर पाओगे. बट जैसा मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कोविड का, पेंडेमिक का, तो उस टाइम क्या हुआ, वो एक प्रॉब्लम आया जो एकदम से आया और एकदम से उसको सॉल्व करना वाज वेरी नेसेसरी. अदरवाइज देन इट वाज टेकिंग द लाइफ एंड इट वाज जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, राइट. तो उस टाइम में उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी था. इसलिए सिर्फ आप डेटा ड्रिवन पर नहीं जा सकते. यू हैव टू देन एम्प्लॉय, in order to address some specific challenge, you have to then employ the data analytics. And उस particular problem के लिए आप चूंकि यूज कर रहे हो, तो that is the problem driven approach you are using. So here also one example is given. So for instance, a retail chain, ठीक है, retail chain, it is using data analytics to identifying its declining sales in some particular category. Okay, then it is applying problem driven approach also to address such as inventory management. उसको overall sales में जो क्या हो रहा था, एक organization क्या है ना कि overall sales को बेहतर करने के लिए डेटा ड्रिवन अप्रोच पहले से यूज कर रही है. पहले से इट इज कलेक्टिंग द डेटा, इट इज टेकिंग अप द कस्टमर फीडबैक, it is collecting all the data, analyzing the data and using data analytics in all its sales. Okay, but then इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कोई इश्यू आ रहा है. मतलब क्या हो रहा है ना कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा, मान लो आप कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है ना, ओवर स्टॉकिंग हो रहा है, राइट, ओवर इन्वेंट्री आ गया है. तो ओवर इन्वेंट्री का आप जानते हो क्या इश्यू होता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ता है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है, आपका ऑब्सोलेंस होने का चांसेस रहता है ना, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, आउट ऑफ फैशन होने का चांसेस रहता है. तो ये सब इश्यू की वजह से इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर, कौन सा इश्यू, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इश्यू को सॉल्व करने के लिए this particular retail chain, it has employed the problem driven approach. Okay, so the supplier's problem was collected, then the pricing and all the strategies were made in order to like cater that category, right. So if the organization uses both of these approaches, it can lever and it can help to solve the existing problem. Along with that, it will be able to एंटिसिपेट एंड मिटिगेट द फ्यूचर चैलेंजेस. ठीक है, कोई भी फ्यूचर में चैलेंज आए तो उसको मीट करने के लिए वो बेटर रेडी रहेगा, लीडिंग टू more strategic and informed decision making. And this will help the organization to make more decision making, to have an informed decision making. So I guess you have understood that one particular approach is not fit for any organization. The organization should use the data driven approach in order to cater the upcoming challenges, in order to mitigate the upcoming challenges. But it has to use the problem driven approach in order to meet that particular challenge that it is facing right now. Okay, so I hope you have understood this, and with this we'll be meeting in the next video. Thank you so much. Bye bye.